everyone, I am Bhavna Sani and I am back with a new video for class 10 and इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर 9 कर रहे हैं। तो ये हमारा डे 9 का चैलेंज है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 8 days सैम्पल पेपर चैलेंज एंड वी आर ऑन 9th डे। अगर आपके प्री बोर्ड पेंडिंग है अभी एंड आपका प्री बोर्ड होना है तो यू कैन सी द चेंज इन योर मार्क्स अगर आपने पिछले 8 सैम्पल पेपर भी करे हैं तो। ऑलराइट, एंड अगर नहीं करे तो फटाफट कर लो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। अब मैं ये जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं रीड कर रही, यू ऑलरेडी नो दैट वी आर ऑन सैम्पल पेपर 9, ठीक है। उसके बाद कितने मार्क्स का ये भी पता लग गया। अब हम हैं सेक्शन ए पे, रीडिंग पे। जो रीडिंग है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। रीडिंग में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 10 मार्क एंड क्वेश्चन 2 अगेन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। टोटल इज 20 मार्क्स। तो अब हम फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल रीड टू द पैसेज। क्वेश्चन ये बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। Many species are bred in zoos and reintroduced in their natural habitat. They were reintroduced means, ठीक है। अब बहुत सारी स्पीशीज है, जू में पैदा होती है, ब्रीडिंग उसकी जू में होती है एंड देन उनको उनके नेचुरल इनहैबिटेट से रीइंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो रीइंट्रोड्यूस का मतलब क्या है? वैसे तो हमें ये समझ ही आ गया बिना पैसेज के, बट फिर भी हम पैसेज रीड करेंगे ताकि हमारा गलत ना हो। A sent back to their original surroundings, B introduced to animals, C familiarized with jungle and D introduced to human. So passage read करते हैं और हमें पता लग जाएगा। Natural depletion to most of us has been reduced to threat of global warming. With the forest cover depleted to a minimum, animals poached to extinction and holidays in wildlife sanctuaries. The interest of few to link with nature seems like a distant possibility. Zoos and zoological park remain the only places for the multitudes to connect with wildlife. Traditionally, zoos have provided an economic form of recreation for people from various strata of society, income and educational level, ages and socio-economic backgrounds. They offer a large vista of possibilities to educate and sensitize people. According to CEE India, in India there are more than 150 zoos and they attract as many as 50 million visitors annually. Today, children have a wide disconnect with nature. An attractive place is required for nature education that will provide a competition to internet, television and playstations. Zoos are a place where children get to see the animals. It gives form to their imagination and opens a new world of curiosity. Many grow up to become crusaders of wildlife protection. In India, Reuben David, a champion of wildlife, created the Ahmedabad Zoo. During his time, the zoo became one of the most remarkable zoos of India and contributed substantially to conservation and research. Animals are exchanged between zoos of the world. Man-animal conflict continues to intensity. The Wildlife Protection Society of India estimated that at least 3189 leopards were killed from 1994 to 2010. Leopards are targeted as they attack livestock and entire human habitation, while animals need protection. Some animal activists talk about banning zoos. What is the alternate plan to save zoo various critically endangered species? Banning zoo might just accelerate their extinction. Zoos provide breeding places for their species that face threat of extinction. Zoo provide breeding places for the species that face threat of extinction in the jungle. When a species is confined to one place, it faces a threat of being wiped away by disease, famine or epidemic. Many species are bred in zoos and reintroduced in their natural habitat. बहुत सारी species को zoo में breed करा जाता है और उसको वापस reintroduce कराया जाता है उनके अपने खुद के natural habitat से. That means they are sent back to their natural habitat. ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? Sent back to their natural surrounding. So A part is the answer, sent back to their natural surrounding, that is the original surrounding. ठीक है, next question आता है, list the reason why zoos offer a large vista of possibility to the multitudes. Rationalize your response in about 40 words. ठीक है, ये अभी हमने क्लियर यहाँ पे पढ़ा था। Traditionally, zoos have provided an economic form of recreation for people from various strata of society. Income and education level, ages and socio-economic background, they offer a large vista of possibility to educate and sensitize people. तो ये पूरा जो है आपका आंसर 2 है,
क्लियर? सो एक बार रीड करते हैं. Zoos provide an economic form of recreation for people from various strata of society, income and educational level, ages, socio-economic backgrounds. In India, for example, they attract almost 50 million visitors annually. Next, complete the sentence appropriately. The author's use of the phrase वाइल्ड लाइफ क्रूसेडर्स फॉर चिल्ड्रन स्टेम्स फ्रॉम. अब ऑथर ने वर्ड यूज किया है वाइल्ड लाइफ क्रूसेडर. किसके लिए यूज किया? फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, क्यों? यहाँ पे देखते हैं क्योंकि वो नेचर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी है कि जितने भी जो यंग एज है, ठीक है, उनको फोन्स वगैरह से सबसे ज़्यादा जू में मज़ा आएगा. एंड जू ही वो जगह है जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, समझ आया? तो उन्हें बोला गया है कि ये जो है दे आर द जू क्रूसेडर्स. ठीक है, कहाँ पे गिवन है ये? देखते हैं हम. Children have a wide disconnect with nature, an attractive place and required for nature education that provide a competition to internet, television and PlayStation. Zoos are a place where children get to see animals. It gives form to their imagination and open a new world of curiosity. Many grow up as become crusaders for wildlife protection. ठीक है, क्या बनते हैं? Crusaders for wildlife protection. ठीक है, that means it educates them about the nature and उन्हें curious बना देते हैं, imaginative बना देते हैं, and they want to conserve that nature. ठीक है, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन फंक्शनैलिटी. कैसे रिलेटेड है? फंक्शनैलिटी में रिलेटेड है. फ्रॉम सेट ए टू ई. ठीक है, आइडेंटिफाई 2 सच सेट जो फंक्शनैलिटी में रिलेटेड है. ठीक है, फेमाइन एंड एपिडेमिक दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर फंक्शनैलिटी, क्योंकि एपिडेमिक सिर्फ फेमाइन से नहीं आता, और भी चीज़ों से आता है. टेलीविजन एंड प्ले स्टेशन, नो, फंक्शंस दोनों के सेम नहीं है. ठीक है, जूज एंड जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, कंजर्वेशन एंड रिसर्च. रिसर्च के बिना आप कंजर्वेशन नहीं कर सकते. सो 2 ही सेट्स ढूंढने थे तो हमने यही ढूंढ लिया, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं कहीं हमारा गलत ना हो. हेल्दी एंड वेल फेड, नो. ठीक है, उसके बाद आता है यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. The author advocate that even ill-maintained zoo should not be closed or banned. जो ill-maintained zoo है उनको भी close या ban नहीं करना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए? Instead हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? Let's read that. ठीक है, एक बार रीड करते हैं, उसको हमें समझ आ जाएगा. हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, 4th से रीड करना है. Yes, in India, Reuben David ये भी पढ़ लिया था हमने. मैन कन्फ्लिक्ट भी पढ़ लिया था. सम एक्टिविटीज टॉक अबाउट बैनिंग जू, ये भी पढ़ लिया था. व्हेन अ स्पीशीज कन्फाइंड टू वन, द इशू शुड नॉट बी, हाँ ये आ गया ना, हमने 7th में ही पढ़ा था और 7th में ही है इसका आंसर. द इशू शुड नॉट बी टू बैन इल मेंटेन जू बट टू पुट मोर इन्वेस्टमेंट इनटू क्रिएटिंग अ नेचुरलाइज्ड एनवायरनमेंट, कीपिंग एनिमल्स हेल्दी, वेल फेड, facilitating captive breeding programs, carrying out research, restoring endangered species, understanding animal behavior, improving animal husbandry, develop conservation initiative and educate the visitors. तो ये आप पूरा लिख सकते हो. ठीक है, एंड इफ यू वांट तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. दैट वुड बी मोर इजी. ठीक है, सो मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी पुट इनटू देम टू क्रिएट नेचुरलाइज्ड एनवायरनमेंट. क्लियर? Based on the reading of the passage, examine in about 40 words what makes the author say that link between man and nature has been broken. तो जो link है man और nature का वो टूट चुका है. Even जो बच्चे हैं वो भी disconnect हो चुके हैं, ये अभी हमने पढ़ा. ठीक है, क्योंकि अब forest की बात करूँ तो it is the link between man and nature has been broken because forest cover stands depleted to a minimum. Animals are poached to extinction and people use wildlife sanctuaries for holiday. Even children have a wide disconnect. ठीक है, समझ आया? So ये सब हमने पढ़ लिया. Zoo a substantial way of conservation, provide life system education and have immense educational and research value. तो हमने सारा पढ़ लिया कि जो children है they are disconnected with the wildlife. Today children have a wide disconnect with nature. ये हमने पढ़ लिया. ठीक है, उसके बाद हाँ ये सारे पॉइंट्स हो गए. ग्रेट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम एक्टिविटीज, नो दिस वन. Zoos help children become crusaders of wildlife protection because they do not like animal locked in cage. They understand the caring animal is a good profession, that caring for animal is a good profession. Zoos sensitize children to animal, they learn to help animal. So zoos जितने भी they sensitize children to animals. ये अभी हमने पढ़ा भी है 2nd या 3rd stanza में. Sorry. Some activists
activists have suggested banning zoo. Why is this not viable scenario according to the author? कुछ activists ने बोला zoo को ban कर दो, but ये इतना viable scenario क्यों नहीं है according to the author? तो ये बोल रहा है कि जो banning zoo है, it might just accelerate the extinction. अगर हम zoo को ban करेंगे तो उससे extinction बढ़ जाएगा of those species that are on the verge of extinction. Zoos provide breeding place for them before reintroducing them to their natural habitat. तो ये कहाँ लिखा है? Some activists talk about banning zoos. What is the alternate plan to save various critically endangered species? अगर हम zoo को ban कर देंगे तो उससे extinction बढ़ जाएगा. Zoo provide breeding places for the species that face a threat of extinction in the jungle, and when a species confined to one place, it faces a threat of being wiped away by disease, famine, or epidemic. Many species are bred in zoo and reintroduced in their natural habitat. Clear? Then moving on to this question. Some activity यही हो गया, banning zoos might just accelerate the extinction of those species that are on the verge of extinction. Zoos provide breeding places for them before reintroducing them to their natural habitat. Now read the following text. ठीक है, ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 10 मार्क्स का है. तो पहले क्वेश्चन देखते हैं and then we will come back to this. Complete the following sentence. IPC 272 and 273 amendments were added to. अब IPC 272 और 273 amendments add क्यों हुए थे? Let's read that. ये जो comprehension है ये हमारे एग्जाम्पल पेपर में रिपीट भी हो चुका है. Data released by India's Food Quality Regulator, the Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI), earlier showed that nearly 25% of samples of edible goods is tested this year were found to be adulterated or in violation of prescribed standard. Okay, then moving on to the next. The sample included milk and dairy products, species, cereals, as well as branded food products. A total of 85,729 samples were sent so far. FSSAI carried out the testing following a spike in complaints from consumer over quality and adulteration, said an agency official. According to the data, 20,390 samples of the 85,729 sent to the agency were found to be non-conforming to prescribed standard. While agency officials maintain that food safety officer in each state regularly test sample to check for compliance and also take recourse in cases of violation according to the Food Safety and Standard Act 2006. Experts claim that the poor enforcement on the ground and a lack of awareness plagued the process. Consumer activist Baijan Mishra said that lengthy legal procedure involved in penalizing violators provides an opportunity to the accused to keep doing business. Law enforcement is very poor. It takes years to finalize the case. By that time, seller keep on making profit. Moreover, people are also not aware. Hardly anybody complains about the adulteration, he added. Umesh Sharma, an advocate, said enforcement of rule is very poor on the ground. The issue is directly related to the public health and the government should take serious initiatives to implement food safety rules. He said data from the agency shows an abysmal conviction rate. In 2017, the Law Commission issued a set of recommendations regarding the issue. The panel had recommended that IPC 272 dealing with adulteration of food and drink and 273 dealing with the sale of nauseous food and drink be amended to make adulteration a serious crime. तो बेसिकली ये क्या क्यों ऐड किए गए थे? फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, एंड एडल्ट्रेशन को एक सीरियस क्राइम बनाने के लिए. सो complete the following sentence. IPC 272 and 273 amendments were added to regulate the quality of food in India, and you can also write to make adulteration a serious crime. Clear? Then moving on to the next question. Our next question says that, here is the next question. Fill in the blanks to complete the following sentence. Dash allow the penalized to continue their business. क्या allow करता है penalized को to continue their business? Lengthy legal procedure. ठीक है? Lengthy legal procedure involved penalizing violator provides an opportunity to the accused to keep doing business. ठीक है? So इसका हो गया lengthy legal procedure. Then moving on to the next question. Explain why penalizing adulteration in India is challenging. अब ये बताना है कि penalizing adulteration in India challenging क्यों है? क्योंकि ये इतना legal लंबा procedure है कि इससे कि
बाद भी बिजनेस चलता रहता है, लो इन्फोर्समेंट हमारी काफ़ी पुअर है, वो पूरा मेंशन करना है। कंज्यूमर एक्टिविस्ट ये नहीं, सॉरी, the lengthy legal procedure involved in penalizing violator provide an opportunity to the accused to keep doing business. Law enforcement is very poor. It takes years to finalize a case, and by that time, seller keeps on making profit. Moreover, people are also not aware about it. So hardly anybody complains about adulteration. So इसका आंसर ये हो गया. All right. Next, what did the data revealed by FSSAI shows? अब जो डेटा है जो FSSAI ने बताया है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि सिर्फ 25% जो सैंपल्स थे, ठीक है, वो एडिबल टेस्टेड फूड थे, ठीक है. Only 25% of the sample of edible good tested this year were found to be adulterated or in violation of prescribed standard. तो only नहीं, nearly 25% of edible goods जो थे they were found to be adulterated, या वो prescribed standard के हिसाब से नहीं थे, ठीक है. That is why FSSAI is very strict. Substitute the word punishing with one word. अभी हमने 3-4 बार भी पढ़ा similar in paragraph 4 sentence from the paragraph 4. The lengthy legal procedure involved in punishing violators provides an opportunity to the accused to keep doing business. तो अभी हमने 3-4 बार एक वर्ड पढ़ा है जो punishing से काफी similar है, that is penalizing, ठीक है. Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the punishment set for offenders. Life imprisonment, public shaming, sentence for 6 months, both A and C. तो ये देखते हैं हमने रीड करा है या नहीं करा. अब ये हमने वैसे यहाँ तक ही पढ़ा था ना. हाँ. It was also recommended that depending upon the gravity of the offence, punishment can include life imprisonment and the minimum sentence should be 6 months in jail term. तो life imprisonment भी है, 6 months भी, depending upon the gravity of the crime. तो इसका होगा both A and C. Yeah, life imprisonment and sentence of 6 months. ठीक है. Which sample were tested by FSSAI and why? Also, what did the data suggested? अभी हमने पढ़ा FSSAI ये कौन से सैंपल करते थे? मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, ठीक है, स्पाइसेस, ये सारे अभी हमने पढ़े. The sample included milk and dairy products, spices, cereals, as well as branded food products. अब सैंपल्स क्या थे? टोटल इतने सैंपल भेजे गए थे, ठीक है, एंड टेस्टिंग हुई इस पे कंप्लेंट्स की वजह से, एंड आउट ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू द डेटा, आउट ऑफ दिस ये सैंपल्स जो थे they were found to be according to the non-conforming prescribed standard. तो इतने सैंपल्स आउट ऑफ 82,729 प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थे, ठीक है. समझ आया? ये भी हो गया, ये भी हो गया. Which of the following recommendations were made by the Law Commission regarding to the issue? Law Commission ने क्या बोला था? Minimum sentence should be 6 months jail term, ठीक है, बोला था. Depending on the gravity of the offence, punishment can include life imprisonment, ये भी बोला था. Adulteration एक serious crime बन गया, ये भी बोला था. तो answer is D part, all of the above. All right. Now moving on to the next question. Next question है grammar and writing skills. 20 marks का है. ग्रामर 10 मार्क्स की है, राइटिंग स्किल्स 10 मार्क्स की है. ग्रामर में 12 क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10. Fill the blank by choosing the correct option to complete the sentence. The mechanic dashed the vehicle since the morning. सुबह से मैकेनिक व्हीकल रिपेयर कर रहा है. तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट. ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अगर आपको याद हो तो हमने क्या करा हुआ है? हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ठीक है. मैकेनिक है तो इसलिए हैज आएगा, तो हैज बीन रिपेयरिंग, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है. रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर एंड शॉपकीपर. कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग शॉपकीपर्स रिप्लाई करेक्टली. एंड शॉपकीपर ने क्या बोला? Customer, can I have a bottle of juice? Shopkeeper, sorry, we only have milk bottle. The customer asked the shopkeeper if he could have a bottle of juice. ये done है. The shopkeeper apologized, यहाँ तक हो गया. And said, ठीक है. अब उसने क्या बोला? Shopkeeper ने अपने लिए we यूज किया था, तो we की जगह आ जाएगा they. we की क्या आ जाएगा जगह they, ठीक है. Only ऐसे ही रहेगा. Only have किस में चेंज हो जाएगा? past tense में had, ठीक है. Milk bottles आगे पूरा से, ठीक है. They only had milk bottles, ठीक है. Select the correct option to fill in the blanks for the given line. Genius does what it must and talent does what it
डैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, ऑप्शन क्या है देखो, जीनियस मस्ट व्हाट इट डज एंड टैलेंट डज व्हाट इट डैश, ए कैन, वुड, मे, शुड। द टैलेंट डज व्हाट इट कैन, जीनियस तो जो जीनियस को जो करना चाहिए वो कर रहा है, ठीक है। टैलेंट वो ही करता है जो वो कर सकता है, टैलेंट डज व्हाट इट कैन। Select the option that identifies the error and supply the correction of the following line, ठीक है। अब ये दी हुई है लाइन, इसमें एरर ढूंढना है। मेक श्योर कि एरर ढूंढ के आप ये ऑप्शन देखो, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। There are not some buses because the drivers have gone on strike, ठीक है। बसेस जो होती है वो काउंटेबल होती है, तो उसके साथ सम तो नहीं आएगा। एंड ये नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देयर आर नॉट एनी बसेस बिकॉज द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक, तो ये एकदम ना के बराबर हो गया, एनी, ठीक है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय fill in the blanks with the correct option. I have dashed Lakshmi for past 12 years, तो मैं लक्ष्मी को पिछले 12 साल से जानता हूँ या जानती हूँ, तो आई हैव नोन, और हैव के साथ वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, तो ये हो गया नोन। Fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket. According to the news, the shar dash to take place. Word का हो जाएगा the shar is to take place. Singular होता है, shar is singular. Report the dialogue between Meena and Neha by completing this narration. Meena, tomorrow is your birthday. What do you want as a gift? Neha, that is a lovely thought, but I don't want anything. तो मीना ने नेहा को बोला, since the next day was her birthday, ठीक है, dash, what do you want? तो what, ठीक है, क्वेश्चन जब होता है स्टेटमेंट में चेंज करना होता है, तब सब्जेक्ट और वर्ब की जगह इंटरचेंज कर लेते हैं, यू की जगह आएगा शी, तो व्हाट शी, डू को डिड में चेंज कर देंगे, सॉरी, व्हाट शी वांटेड एज अ गिफ्ट, व्हाट शी वांटेड एज अ गिफ्ट, डिड तो लगेगा ही नहीं ना, ठीक है, व्हाट शी वांटेड एज अ गिफ्ट, क्योंकि हम स्टेटमेंट में कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। Dawn's favorite activity is draw sketches of her family, ठीक है। अब आपने बताना है कि डॉन की जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है, इज टू ड्रॉ स्केचेस फॉर हर फैमिली, क्या है, इज टू ड्रॉ स्केचेस फॉर हर फैमिली, ठीक है। तो डॉन्स फेवरेट एक्टिविटी इज ड्रॉइंग स्केचेस फॉर हर फैमिली, ठीक है, ड्रॉइंग स्केचेस फॉर हर फैमिली। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड। ही सेड, हैज एनीबॉडी बीन अनकाइंड टू यू। अब एक और चीज, क्वेश्चन WH फैमिली से शुरू नहीं है, तो क्या लगेगा, या तो इफ होगा या वेदर, दैट भी नहीं लगता, ठीक है, क्वेश्चन में दैट नहीं लगता। ही आस्क्ड, किससे, यू बोला हुआ तो मतलब मुझसे, ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर एनीबॉडी had been unkind to me, if anybody had been unkind to me. Identify the error in the given sentence and supply the correction. There must have been something wrong with the cooker today. There must have been something wrong with the cooker today. So there must have been, there must be something wrong with the cooker today. तो have been की जगह क्या होगा, be आएगा, ठीक है, समझ आया। Now next, select the correct option to complete the narration of the dialogue between Tanmay and Astha. Tanmay, how did you spend your vacation? How did you spend your vacation? Astha, I visited Kashmir with my parents. So, Tanmay asked Astha how she had spent her vacation. Astha replied that I किस में change होगा, she, ठीक है। Visited का किस में change होगा, had visited, क्योंकि past perfect में change करेंगे, past को किस में change करते हैं, past perfect में, तो had visited Kashmir with her parents, तो had visited Kashmir with her parents, ठीक है, तो she had visited Kashmir with her parents. Clear? Next, identify the error in the sentence and supply the correction. We can expect few more mosquitoes after continued falls of rain, ठीक है, तो फ्यू तो नहीं होगा, सम होगा, तो ज़्यादा होता है, फ्यू से ज़्यादा ही मस्किटोज आएंगे। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर मस्किटोज आफ्टर कंटिन्यूड फॉल्स ऑफ रेन।
नाउ लेट्स कम टू द राइटिंग पार्ट. राइटिंग पार्ट में 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स ईच. ठीक है, एक लेटर है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ है. लेटर में 2 ऑप्शन है, यू हैव टू अटेम्प्ट वन. एनालिटिकल पैराग्राफ में 2 ऑप्शन है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. ठीक है, लेटर इसमें सॉल्व है, लेकिन आई एम अगेन सेइंग कि लेटर में मिस्टेक है, वी हैव टू स्पॉट आउट द मिस्टेक ओवर हियर. ठीक है, तो देखते हैं इसमें मिस्टेक. यू आर अरिहंत अनन्या ऑफ अशोक विहार. राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट to cabinet world regarding the faulty cabinet that they have sold to you. Invent the necessary details on your own. तो लेटर ऑफ कंप्लेंट है अशोक विहार के, तो हाउस नंबर अशोक विहार न्यू दिल्ली. फेस 1 लिखना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हाउस नंबर 4 अशोक विहार नेक्स्ट लाइन में, न्यू दिल्ली नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि 3 लाइन्स में एड्रेस होता है. तो कैसे लिखोगे, हाउस नंबर 4 नेक्स्ट लाइन अशोक विहार नेक्स्ट लाइन न्यू दिल्ली. ठीक है, फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट डेट. डेट के बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, और डेट बिल्कुल ऐसे लिखनी 19 मई 2023 या 24 व्हाटएवर. द मैनेजर कैबिनेट वर्ल्ड दिल्ली. करेक्ट. सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट फॉल्टी टेलीविजन कैबिनेट. ठीक है, फॉल्टी टेलीविजन कैबिनेट, यू हैव टू अंडरलाइन इट. परचेज्ड एट कैबिनेट वर्ल्ड. ठीक है, देन लीव अ लाइन. सर, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा. ठीक है, कितने पैराग्राफ्स में लेटर लिखते हैं, 3 पैराग्राफ में लेटर्स लिखते हैं. तो लेट्स सी कि इन्होंने 3 में लिखे हैं या नहीं. यस, इन्होंने 3 में लिखे हैं. ठीक है, सो आई एम अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ अ टेलीविजन कैबिनेट आई बॉट फ्रॉम योर शॉप ऑन 5th May एंड आई एम राइटिंग अ लेटर टू सीक अ रिप्लेसमेंट. तो सबसे पहली बात यहाँ पे 5th में लिखा है ना, तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उससे पहले की डेट लिखना. ऑब्वियसली आप पहले कंप्लेन करोगे और बाद में खरीदोगे, ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, तो कम से कम 2 दिन का गैप जरूर रखना. द कैबिनेट डोर्स डू नॉट ओपन एंड शट प्रॉपर्ली एंड द स्टेन ऑन द कैबिनेट इज अनइवन विद one half darker than the other. The cabinet was delivered on 15th May and I noticed this problem as soon as I unpacked it from the box. The cabinet is not of acceptable quality and does not match the sample cabinet I was shown in the store. I would like you to replace it with one of the same quality and finish as the sample and arrange for return of the faulty cabinet at no additional cost. ठीक है, I have ये आपका हो गया सेकेंड पैराग्राफ, ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ आपका ये होगा. I have attached a photocopy of my receipt as a proof of purchase. I would like to have this problem fixed as early as possible. If I do not hear from you within 10 days, I will have to lodge a formal complaint with Consumer Affairs in my state. You can contact me on particular this number to discuss the matter further. Looking forward to your cooperation. Leave a line. फिर यहाँ पे thanking you भी आएगा. Yours sincerely, अंतरा या अरिहंत, whatever the name is mentioned, अनन्या या अरिहंत. ठीक है, देन और पार्ट में देखते हैं क्या है. You are Mohammed Ali Saiba Ali, residing in 145 Kirtinagar, New Delhi. You have to write a letter to Deputy Commissioner of Police, drawing his attention to the deteriorating law and order situation in the city. सबसे पहले हम वही करेंगे, एरर स्पॉट करेंगे, एज यू नो द फॉर्मेट नाउ. ठीक है, 3 लाइन में आपका एड्रेस होना चाहिए. तो हाउस नंबर 1545, नेक्स्ट लाइन कीर्तिनगर, नेक्स्ट लाइन न्यू दिल्ली. Then date perfect है 5th January, 2020, whatever you want to write. Leave a line. The deputy commissioner, यहाँ पे पुलिस आएगा, फिर दिल्ली आएगा. Then again leave a line. Moving on to the next. Subject क्या है, deteriorating law and order situation in the city. Underline the subject. Then you have to again leave a line and write sir, no slash, no madam, no comma. ठीक है, 3 पैराग्राफ में आएगा लेटर. Through this letter, I wish to bring your kind attention towards the deteriorating law and order situation in the city. Many incidents of daylight thefts and killing have been reported during the recent days. Incidents of chain snatching, kidnapping, rape and murder are also on the rise these days. It seems everybody is unsafe, whether it is person walking on the street or person at home. ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ 1. Everyone is susceptible to fall prey to the evil intention of the anti-social elements in the society. There is no peace and disquiet has become a norm. Even terrorists are seen wandering fearlessly in broad daylight. ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ 2.
None of these criminals have been arrested so far. If arrested, many of them go scot-free. Those not arrested are seen roaming freely on roads. It seems there is no law and order to control this kind of incidents. It is time that law are applied more effectively to curb the menace. I request you to look into this matter and take necessary action immediately to enable the residents to live in peace. ठीक है? Then again you have to leave a line thanking you, yours sincerely, मोहम्मद अली और साइबा अली, जो भी आपका नाम हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 इज एनालिटिकल पैराग्राफ. बहुत ईजी होता है. यू जस्ट हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, डिस्क्राइब इट वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड एंड एड लिटिल बिट ऑफ योर ओपिनियन. ओके. 5 मार्क्स का 2 ऑप्शन है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. The following line graph shows the average monthly temperature in 3 major cities. Write an analytical paragraph on the basis of the line graph, reporting the important information and making comparison wherever relevant. तो ये क्या है? Average monthly temperature in 3 major cities. तो इसकी heading देनी बहुत ज़रूरी है analytical paragraph की. The average monthly temperature in 3 major cities. यही दे देती हूँ मैं. ठीक है. 1 mark free के. Then I have to leave a line and start describing what I have understood. ठीक है. ये है टेम्परेचर इन सेल्सियस. ये है मंथ्स ऑफ द ईयर. ठीक है. दिस इज फॉर दुबई. ठीक है. उसके बाद दुबई के बाद दिस इज फॉर द ब्लू वन इज फॉर सिडनी एंड द नेक्स्ट वन ग्रीन वन इज फॉर पेरिस. तो देख रहे हो सबसे कम पेरिस का था, राइज होता 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 फिर नीचे आ गया, बट इट इज़ अगेन लोअर देन दुबई. बीच में सिडनी का भी कम हुआ था, सबसे ज़्यादा सिडनी का था एंड देन ऐसे ऐसे करते करते अगेन ऊपर आ गया. दुबई का सबसे हाई तक गया. ठीक है. So the line graph shows the monthly average temperature of 3 major cities, that is Paris, Sydney and Dubai. ठीक है. हो जाएगा ये. उसके बाद थ्रू आउट अ ईयर एज द ग्राफ इलिस्ट्रेट, इन जनवरी द टेम्परेचर इन पेरिस इज जस्ट बिलो 5 degrees Celsius, making it the coldest month of the year. As for Dubai, it has a temperature for just below 20 degrees Celsius and is the coldest month of the year. Meanwhile, Sydney has a temperature of just below 25 degrees Celsius in January, which remarkably is the hottest month of the year of this city. Now, the temperature of Paris slowly increases over the year and reaches as high as 20 degrees Celsius in the month of July and August. At the same time, the temperature of Dubai is also on the rise, reaching just above 35 degrees Celsius in the month of August. In contrast, the temperature of Sydney keeps on falling over the year till it reaches as low as 13 degrees Celsius in July, making it the coldest month of the year of this city. In the latter half of the year, we notice that the temperature of Paris and Dubai is on the fall while the temperature of Sydney is on the increase. From August, the temperature of Paris keeps on falling till it reaches 5 degrees Celsius in December. At the same time, the temperature of Dubai also keeps falling till it reaches around 22 degrees Celsius in December. On the other hand, the temperature of Sydney is on a rise in the latter half of the year. From July, we see a steady increase in temperature till it reaches 23 degrees Celsius in December. Overall, we can conclude that the line graph shows that Paris is the coldest city and Dubai is the hottest city among the three. As for Sydney, it maintains a moderate temperature throughout the year. Easy, very easy. अब next analytical paragraph पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या बताना है. The graph below shows fast food consumption among men and women in 2015. Write an analytical paragraph in 100 to 120 words by selecting and reporting the main features and making comparison wherever relevant. ये क्या है? Average percentage of daily calories from fast food 2015 का है. The darker one is men and the lighter one is women. और ये age group mention है, तो ये बहुत easy है to describe. ठीक है. एवरेज परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरीज फ्रॉम फास्ट फूड 2015 हेडिंग देते 1 mark. लीव अ लाइन एंड स्टार्ट इट. द बार ग्राफ शोज हाउ मच फास्ट फूड मेन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप कंज्यूम एवरी डे इन 2015. In both groups, the percentage of daily calories from fast food decreased as age increased. According to the graph, men consumed less fast food as they got older. The 18 to 34 age group had the highest rate, getting around 17% of daily calories from fast food. There was a significant drop to just over 10% between this group and the next age 35 to 49. Then there was a smaller drop to around 9% in the 50 to 64 age group. The oldest age group, age 65 and over, had a much lower consumption rate with just over 4% of daily calories coming from fast food.
Among women, there was similar decrease in fast food consumption with age increase. Women aged 18 to 34 got 16% of their daily calories from fast food. Like men, there was significant drop between this and the next age group to a little under 10% and then a smaller drop to the next group. The oldest age group consumed far less, under 4%, than the other age groups. There was a similar decrease in fast food consumption with increase in age for both men and women, although women tended to consume slightly less than men across all age group. सबसे पहले मेन का बता दिया, फिर वुमेन का बता दिया, दोनों को कंक्लूड करके कंपैरिजन दे दिया. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी. सेक्शन सी है आपकी लिटरेचर एंड जो लिटरेचर है वो 40 मार्क्स की है. लिटरेचर के लिए आपने 2 बुक पढ़नी है. एक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फील्ड्स. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आरटीसी है. ठीक है. या तो ये फर्स्ट फ्लाइट में से गिवन है, ठीक है, और करके आपको गिवन होगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से. तो जो आता होगा यू हैव टू अटेम्प्ट दैट. He knows that I am lost, I thought. He's trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota. Last time to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. But then he started to go down and I followed through the storm. This is 2 stories about flying, that is black aeroplane. ठीक है, read कर लिया. None of the following points perfectly justify the statement. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. तो ये जो line है, he knows that I am lost. I thought he's trying to help me. ठीक है. अब ये बताना है कि क्या जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी परफेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को. क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? लेट्स सी दैट. It's true because the stranger pilot knew how to negotiate the storm quite well. No, ये नहीं होता apply. It is false because the stranger pilot was out of trick to the authors. No, definitely true because the stranger pilot had been sent by God to help the author. We don't know. हो सकता है उसका भ्रम हो. It was probably the author's subconscious that was trying to find a way out. No. ठीक है. We can say that देखो ये फॉल्स है बिकॉज जो स्टेटमेंट डी है वो जस्टिफाई कर रही है कि भाई उसके सबकॉन्शियस माइंड में था दैट समवन वाज ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट फॉर हिम. ठीक है. The author says, but then he started to go down and I followed through the storm. What happened after this? Answer in about 40 words. The author said, but then he started to go down. ठीक है, मतलब then he started to go down. Where he started to go down? Towards the runway. ठीक है, and उसने अपना एरोप्लेन को safely land करा. ठीक है, but जो black aeroplane था, it was nowhere to be seen. ठीक है, वो डिसअपियर हो गया. ठीक है, एंड जब उसने पूछा कि भाई ब्लैक एरोप्लेन के बारे में इन द कंट्रोल रूम, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया दैट देयर वाज नो अदर प्लेन ऑन द रडार इन द स्काई एक्सेप्ट हिज ओन ओल्ड Dakota. ठीक है. The author saw the runway and landed his aeroplane safely, but the black plane is nowhere to be seen in the sky. It has disappeared as mysteriously as it had appeared. When he asked about the black aeroplane at the control room, he is informed that there was no other plane in the sky except his flight that night. Which figure of speech has been used in the given statement? I was very unhappy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. ठीक है, he was comparing himself to an obedient child using a word like, so simile is used. ठीक है. If this extract were to be filmed, what would be required to bring out the dramatic effect of the movement? अगर इसको फिल्म करना होता तो क्या ड्रामेटिक इफेक्ट आता है इसका मूवमेंट पे? ठीक है, आई थिंक विजुअल इफेक्ट्स. विजुअल इफेक्ट्स से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट आता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आरटीसी. नेक्स्ट आरटीसी क्या है? We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the lids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China. Rajveer added, as far as back as 2700 BC, in fact, words such as tea, shaf, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage.
The train clattered into Mariana Junction. The boy collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. कौन से चैप्टर से? ग्लिम्स ऑफ इंडिया लास्ट पार्ट, ठीक है, टी फ्रॉम असम वाला. In the statement, the boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. The meaning of push their way means to remove physical obstacles. मतलब ऐसे धक्का दे दे के physical obstacle remove करके वो जा रहे थे. To ward away rules and restrictions तोड़ के जा रहे थे. To show someone, किसी को धक्का दे के जा रहे थे. To make way for yourself. So push their way का मतलब हो गया they were making their way for themselves. So to make way for yourself is the correct answer. Why did Rajveer have to convince Pranjal with an Indian legend about the origin of tea too? अब राजवीर ने प्रांजल को कैसे कन्विंस किया with an Indian legend about the origin of tea? Pranjal was unaware of both the story, Chinese story also and Indian story also, which was related to the discovery of tea. Probably like any young man, he had a scientific temperament, so readily did not believe popular legend. Hence, he scoffed at the idea. So Rajveer had to narrate both legends to convince him. Below are given some sentences with the word legend. Which of these words has expressed the same meaning as in the passage? अब legend का क्या है? The football superstar Messi is a living sport, legend of our time. No, the Legend of Rama also has an unanimated version, very popular even in Japan. Yes, the arrogance of some world politician come dictators is legendary. No, यहाँ पे सुपरस्टार वाले लेजेंड की बात नहीं हो रही, लेजेंड ऑफ रामा जैसे एनिमेटेड वर्जन की बात हो रही है. ठीक है. द एरोगेंस ऑफ सम वर्ल्ड पॉलिटिशियंस, नो. ठीक है. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इन सिमिलर टू अ मीनिंग शॉर्ट लाउड रिपीटेड साउंड क्लैटर्ड, द ट्रेन क्लैटर्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं. इट इज एन एक्सट्रैक्ट विच इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट. ये पोएम्स में से एक्सट्रैक्ट है, 5-5 मार्क का है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. ठीक है. Belinda's embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did guide it around the dragon that ate the pirate. कौन सी पोयम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है. यहाँ पे नाम गिवन है पोयम का, जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड्स में भी गिवन हो. सो मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द चैप्टर्स thoroughly. The figure of speech other than the alliteration in ink and blink in glee did guide it is dash because of dash. ठीक है. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट. यहाँ पे एलिट्रेशन के अलावा और कौन सी यूज की गई है? यहाँ पे एसोनेंस यूज किया गया है. कैन यू सिंग इंक, ब्लिंक, ग्ली, डिड, गाय, ये सारे क्या वोवल साउंड को रिपीट कर रहे हैं. सो एसोनेंस बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन ऑफ द वोवल साउंड आई. What is the reason for this sudden show of affection? Which word indicate that there is a change in behavior and mood in the extract? अब इसमें क्या था? What is the reason of this sudden show of affection? एंड कौन से वर्ड है जिसमें बिहेवियर एकदम चेंज हो गया और मूड चेंज हो गया एक्सट्रैक्ट में. ठीक है. अब यहाँ पे बात करें, जो कस्टर्ड था उसने क्या किया? सीधा पायरेट को गॉबल अप कर लिया. ठीक है. जो बेलिंडा और उसके पेट्स को थ्रेटन कर रहा था. एंड दिस इज दैट इज वाई दे वर शोइंग सो मच अफेक्शन टू द कस्टर्ड. एंड जो चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है दैट इज एम्ब्रेस्ड, licked and guided. क्योंकि पहले वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, but now they are showing all the affection to him. ठीक है. So Custard the cowardly dragon gobbling up the pirate who was threatening Belinda and her pets. The reason for this sudden show of affection, the word that indicate this change in the mood and behavior in the extract are embraced, licked and guided. Which of the following best describe the way the dragon drove fear into the heart of pirate? A. He whistled like an engine. No. He snorted like an engine. हाँ, ये use किया गया था. He glittered, clinked and jingled. No. He clashed and crushed the pirate. No. He snorted like an engine. Comment on the poet's use of repetition of sound in these lines. The poet uses consonants and assonants for the rhythm rhyme by repeating the sound D, T, I and R in line 1 to 4 respectively. The alliteration sound glee, did, guided adds to the rhythm. The poet sticks to the regular rhyme scheme A, A, B, B in the extract of rhyming scheme. तो use of repetition of sound, assonance repeat कर लिया, consonants हो गया, alliteration हो गया, rhyme scheme बता दी, figure of speech के हिसाब से that is A, A and B, B. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं कौन सी पोएम का है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. सो दिस इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट.
प्लीज़ चैप्टर रीड करके जाना, पोएम रीड करके जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको चैप्टर के या पोएम के नाम दिए हो, ठीक है। इन वॉट वे डज द लैंग्वेज यूज इन दिस पोएम चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ वॉट पोइट्री शुड बी। अब फ्रोस्ट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने एवरीडे सिंबल और लैंग्वेज को यूज़ किया है, फ्री वर्ड्स में जो है पोएम बनाई है टू एक्सपोज कि वो कितना सैड था, डिसहार्टेंड था, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल प्रोज है बट इमेजरी है, वी कैन इमेजिन इट, एंड वोकैबुलरी जो है इट शोज दैट इसमें राइम मिसिंग है। So Frost uses everyday symbols and language and free words to expose his disheartened heart to the reader. It resembles more of a simple prose, but the imagery and the choice of vocabulary more than make up for missing rhyme. What is the significance of an uncommon bird like a crow and poisonous tree in the poem? What do they reflect about the poet and his overall mood and tone of the poem? तो सबसे पहले बताना है कि बर्ड जो थी लाइक क्रो और पॉइजनस ट्री, ये दोनों क्या है, ये दोनों सॉरफुल माने जाते हैं, ये बैड ओमेन माना जाता है। स्टार्टिंग में जो पोएट है उसका मूड बहुत ख़राब था, बट इन दोनों अनकॉमन चीज़ों की वजह से उसका मूड जो है वो बेटर हो गया। दिस शोज़ कि भाई हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बैड ओमेन है, हमें ये पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए कि भाई कैसे नेचर ने उसका मूड चेंज कर दिया। The poet seems to be in a sorrowful mood, so he cannot either see or appreciate the beautiful and sweet side of nature. Only bitter and harsh images crop up in his mind. That is why he uses uncommon bird like a crow and poisonous hemlock tree in the poem. So poet ने भी hemlock tree और bird इसलिए use किया क्योंकि वो बहुत sorrowful mood में था and he was not able to appreciate the beauty of the nature, so he used the uncommon bird and the uncommon tree as well. Complete the sentence with appropriate option. Of the many symbols the hemlock tree represent, the one the frost drew upon in a likelihood for all this poem. अब जितने भी symbols हैं of the many symbol जो hemlock tree है रिप्रेजेंट करता है, द वन दैट फ्रॉस्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर द पोएम इज लॉन्गेटिविटी, टुगेदरनेस, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे उसने पोएट का मूड ठीक किया है, ठीक है, तो पोएट के मूड को हील किया है। आइडेंटिफाई हाउ हैज फ्रॉस्ट यूज्ड कंट्रास्ट इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम। फ्रॉस्ट ने कंट्रास्ट कैसे यूज किया इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम? Frost has used the contrast between the fortitude displayed by the crow and the poet's own spell of indulging in self-pity to show that life moves forward and survives on the hope. अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके सारे जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट फ्लाइट से है, 5 क्वेश्चंस है, and out of 5 questions you have to attempt any 4. Each question is of 3 marks and in 40 to 50 words you have to answer that. What does Shubukov at first suspect Lumov had come to his house for? शुबुकोव ने क्या सोचा था कि लमोव क्यों आया उसके घर में? शुबुकोव ने सोचा था लमोव उसके घर में उससे पैसे मांगने आया है, लेंड करने आया है पैसे, बिकॉज ही वॉज ड्रेस अप इन अ फॉर्मल ड्रेस, right? Seeing Lumov in an evening dress at his house, Shubukov at first thought that Lumov had come to borrow some money from him. In his mind, Shubukov had decided not to lend him any money, but still he talked quite politely to him. How did Wali manage to leave her house? अब वली ने कैसे मैनेज किया to leave her house? Every day after lunch, वली की जो मदर है वो नैप लेती थी for 2 hours from 1 to 3 hours. Wali usually used this time to indulge her in her excursions. As she stood looking from the doorway of her house or venturing out into the village, she used the same hours for her first excursion outside the village. Money is external. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर्स में हमने करना है. What does the poet John Berryman mean by these words? अब ये कौन से मनी इज एक्सटर्नल बॉल पोएम है, इसमें ये बोला हुआ है कि मनी कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग, मनी कैन नॉट बाय यू एंड हैप्पीनेस, मेमोरीज नहीं बाय कर सकती, तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजेशन मनी नहीं दिला सकती, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, एंड अगर वो हमसे दूर हो जाती है तो मनी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है। सो मनी इज एक्सटर्नल, इट कैन नॉट बी यूज टू रिप्लेस एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इट कैन नॉट बाय मेमोरीज. वी मस्ट लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टेक केयर ऑफ आवर पोजेशन. The thing we possess have memories attached to them, hence they must be taken care of. Money cannot replace everything because it cannot compensate for the sense of loss suffered by a person. Next, the yellow hair is a symbol in the poem. Briefly support the statement with reference to the poem for Anning Crowley. The yellow hair is a symbol in the poem. In some country, the yellow hair or blonde hair is considered
very appealing in contrast to the dark hair. So girl with lighter hair color are portrayed as beautiful in movies and stories. So the yellow hair of Anne Gregory in the poem emphasizes her beautiful outlook. Okay, so in some country, yellow or blonde hair is considered appealing in contrast to dark hair. Girls with lighter hair color are portrayed as beautiful in movie and stories. So the yellow hair of Anne Gregory in the poem emphasizes her beautiful outlook. Next question is, how far would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances? तो कहाँ तक तुम इस चीज को अग्री करते हो कि एक ही पॉजिटिविटी जो है वो ब्राइटनेस लेके आती है even in the bad condition? तो ये letter to God है. So it is absolutely true that optimism can bring about a spark of brightness even in adverse situations. It was Lencho's innocent of optimism that eventually led to his getting 70 pesos. In fact, it was his positivity despite the hailstorm that he even wrote a letter to God in first place. His hope finally triumphed. Finally triumphed. Now question number 9 जो है आपका वो है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से 3 क्वेश्चंस है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 बट हम डिस्कस सारे करेंगे. Was there any balcony outside the window? No, there was no balcony outside the window. What role did it play in the story The Midnight Visitor? तो जब ऑसिबल ने मैक्स को देखा हाथ में पिस्टल पकड़े हुए, ही मेड अप अ स्टोरी अबाउट अ बालकनी एंड जैसे ही डोर नॉक हुआ उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई वेटर को पुलिसमैन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया कि बाहर पुलिसमैन है एंड ही कन्विंस मैक्स टू हाइड हिमसेल्फ इन द बालकनी. बट जब वो हाइड करने गए वहाँ पे बालकनी थी नहीं. ठीक है, सो व्हेन ऑसिबल सॉ मैक्स होल्डिंग अ पिस्टल aimed at him, he made up a story that there was a balcony through which it was the second time in the month that an intruder had entered his room. When there was a knock at the door and Max feared that he would be caught by the police, he jumped down on the balcony and met his end. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. What is the theory and who proposed it? ये किसकी बात हो रही है? मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की. रिचर्ड एवराइट की जो न्यू थ्योरी थी दैट जिसकी वजह से अगर वो करेक्ट साबित हुई तो इट विल बी अ बिग step towards understanding the process of life. So it was a theory related to cell life. It came to him while he was looking at x-ray photos of a chemical structure of hormone. The photos gave him an answer as to how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in which nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and functions of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. Everett proposed this theory with the help of roommate James R. Wong. ठीक है. What happened at the ball was Matilda's dream fulfilled. Ball में क्या हुआ था? At the ball, Matilda was drunk with pleasure and filled with joy. She danced joyfully and excitedly. Fascinated with her charm and beauty, all the men wanted to be introduced to her. The officials of the ministry even desired to dance with her. She danced with passion and forgot everything in the victory of her glory. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्लाइट से है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है एंड 6 मार्क्स का है. According to Nelson Mandela, every man in life has twin obligation. What are these obligation? Do you agree with Nelson Mandela's opinion about the twin obligation? ये important question है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को पता अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हर एक इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, वन टुवर्ड्स द कंट्री एंड अदर टुवर्ड्स द फैमिली. राइट, सो येस आई डू अग्री विद हिम. ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं. नेल्सन मंडेला बिलीव दैट इन लाइफ एवरी मैन हैड ट्विन ऑब्लिगेशन. दीज वर ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, and other obligation to his people, his community and his country. He said that in a civil and human society, each man was able to fulfill these obligations. But in South Africa, previously it was impossible for a dark-skinned man to fulfill both of these obligations because men of color who attempted to live as human beings in South Africa was punished and isolated. I fully agree with Nelson Mandela because in any country where people are being oppressed, anyone who wishes to fulfill his duty to his people is bound to be prevented from fulfilling his obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband. To serve the cause of his people, Nelson Mandela had to spend 30 years in prison, like many Indian freedom fighters who struggled for the sake of the freedom their beloved country. Okay, how does Amanda tackle the nagging nature of her parents? Explain with example from the poem Amanda. What value does it portray about Amanda? तो Amanda कौन थी?
उसके पेरेंट्स उसको नैग करते रहते थे, स्पेशली हर मदर। उस टाइम पे वो उसको कैसे टैकल करती थी, बाय इमेजिनिंग हर सेल्फ दिस और दैट। ठीक है, समझ आया? तो व्हाट वैल्यू डज इट पोर्ट्रे अबाउट अमांडा दैट शी वांटेड टू हैव अ फ्रीडम, अकेले रहना चाहती थी वो। ठीक है, सो अमांडा इज अ स्मॉल गर्ल हु इज टर्म्ड एज मूडी फॉर हर केयरलेस बिहेवियर, but it is very surprising to know that this is her defense mechanism to shield herself against her nagging parents. Amanda is getting instruction from her parents, which becomes too much to handle for the small girl. She is told not to eat nails and sit in a proper position. Amanda's response to it, her work of imagination, where she is a mermaid drifting effortlessly by a languid river. Further, she is asked about cleaning her room and finishing her homework, to which she reacts by imagining herself being an orphan roaming in the street and making patterns with her bare feet. Amanda then faces the heat of for eating a chocolate which had once caused her acne. This time, in her imagination, she takes the form of Rapunzel and wishes to live on the top of a tower away from everyone. Amanda's parents are upset over her behavior and casualness, but she stays in her own world. All these portray Amanda is in a positive light, while her parents in a negative light. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, एंड ये कौन से उससे है? फॉर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। देयर आर 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, 100 to 120 वर्ड्स में, एंड ये 6 मार्क्स का है। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। Above statement easily shows that Mrs. Pumphrey is very loving and caring mistress for Tricky. Explain the truth with instance from the story. तो सच्चाई क्या है कि भाई उनके लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने ट्रिकी को बिगाड़ दिया था, एंड वो उसको ओवर फीड कर रही थी, जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार हो रहा था। तो हर लव वॉज नॉट गुड फॉर ट्रिकी। तो इतना प्यार भी नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाले बंदे को बीमार कर दे। ठीक है, Mrs. Pumphrey was a very loving and caring mistress of Tricky. She looked after her pet, Tricky, with great love and pampered him a lot. But due to her immense love and affectionate nature, she did not realize that too much indulgence was proving harmful for him. When Tricky was listless and seemed to have no energy, the first thought that came to her mind was that it must be due to malnutrition. Like a caring mother, she started giving him a little extra food between the meals to build him up. Out of the sheer love and concern, she gave him some malt, cod liver oil, and bowl of Horlicks. She could not even cut on sweets because he appeared to be so weak, and moreover, she found it very difficult to keep Tricky on a very strict diet. She wasn't wise, but she was very loving. She almost swooned when Mr. Harrier suggested that Tricky should be hospitalized. She even wailed when Tricky was being taken away by Mr. Harrier. While her entire staff carried all Tricky's favorite thing to the car, she, with a despairing cry and tears in her eyes, threw an armful of the little coats through the windows of the moving car when Tricky was being taken away. Later, Mrs. Pumphrey called up a dozen times a day for the latest bulletins on Tricky's health. On being told that Tricky was convalescing, she sent fresh eggs, wine, and brandy for him. She loved Tricky so much that when he got well, he thanked Mr. Harriet by saying that this is a triumph of surgery. A lawless scientist is a curse to the society. Discuss the reference to the story Footprints Without Feet. A true scientist is always dedicated and concerned about the welfare and the well-being of the society as a whole. A scientist should never be selfish but use his invention and discoveries for the benefit of the entire mankind. His goal should be to see the people his goal should be to see the people of the world happy, prosperous, and leading their life comfortably. But a scientist, if he is lawless, is a curse to the society. For instance, Griffin in the story Footprints Without Feet was a brilliant scientist who made rare discovery of making the human body invisible. But he was selfish, lawless, and concerned more about his own petty gain. He was a lawless scientist who misused his discovery by setting his landlord's house on fire, stealing from the London store, attacking a shopkeeper, and robbing him of his money while he was in London. At Ealing also, he stole the clergyman's money, hit Mrs. Hall by hurling a chair at her, and knocked down the constable after becoming invisible. This shows that a scientist like him is a curse to the society, and rather than causing benefit, he causes more harm to the people around him. So here, a sample paper 9 is completed. Day 9 sample paper challenge done successfully. So अगर आपको कोई भी doubt है sample paper में, you can comment in the comment box, and for the PDF of the sample paper you can reach us out on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video.